Okay, so now we are going to start the next chapter in line related to your biology syllabus, which is got to do with heredity and evolution. Okay, so let us first now talk about what exactly do we mean by heredity and how you can connect that to your evolutionary processes. Okay, so this is something that heredity जो word है, all right, the moment you hear that word, you should realize कि ये chapter जो है is going to deal, okay, with the subject of genetics. Okay, I'm sure you've all heard the term genetics, all right. You must have done a little bit about genes, DNA in your earlier classes. You must have read a lot as far as your general reading is concerned. So if you need to really define the science of genetics, okay, genetics के बारे में आपको बोलना है, तो then what would you say? Genetics जो है is a science that studies heredity and variation. So it is the science that deals with study of inheritance, or what we call as heredity, and variation. Okay, now what exactly do we mean, all right, by these two terms? Okay, heredity का क्या मतलब है? Now heredity is something that gets passed on from one generation to the next generation. Okay, ऐसे characteristic features जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना विरासत में या वारसागत मिलती है, ऑलराइट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज हेरिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल विल से कि अरे योर आईज आर जस्ट लाइक योर मदर्स आईज, आपकी आंखें एकदम आपके मदर की आंखें की जैसी है. सो व्हाट इज दैट मीन कि कुछ तो ऐसा आपने इनहेरिट किया है, आपको वो विरासत में मिली है कोई चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी, विच इज़ रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल सिस्टम. सो ऐसी कोई भी चीज़ जो पास ऑन होती है एज इट इज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी. ओके, सो हेरिडिटी इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है तो आई वुड से हेरिडिटी, okay, is characters passed on, okay, from generation to generation. This is heredity. All right, which means what? When you're talking of something that is इनहेरिटेड, आप इम्प्लीकेशन ये है कि फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन या फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफस्प्रिंग को जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो वैसे का वैसा आया है. इट हैज़ कम विथ लिटिल और नो चेंज एट ऑल. ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट यू टॉक अबाउट व्हेन यू से इट इज हेरिडिटी. ओके, व्हाट देन इज वेरिएशन? वेरिएशन इसका ऑपोजिट है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरिएशन? कोई भी डिस्कशन जेनेटिक्स का या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का इज इनकम्प्लीट विदाउट डिस्कसिंग वेरिएशन एंड व्हाई दीज वेरिएशंस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर स्टडीज. ओके, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है कि वेरिएशन कैसे इंट्रोड्यूस होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ओके, वी कीप सेइंग कि वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? ओके, वेरिएशन इज, अगर मैं साइंटिफिकली अगर डिफाइन करने जाऊं, ऑलराइट, तो वेरिएशन वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं, ओके, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट आर बिलोंगिंग टू द सेम रेस और द सेम फैमिली और द सेम स्पीशीज. व्हाट डज इट मीन? दो ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, आप और मैं, वी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दो आंखें हैं, नाक है, एवरीथिंग एल्स दैट characterizes us as human being, लेकिन फिर भी आप और मैं एक जैसे नहीं दिखते हैं ना. we don't look exactly the same. थोड़े थोड़े छोटे छोटे differences हैं. okay, maybe the color of your eyes is different from my color. okay, maybe the color of your hair is different from my hair. so ये जो छोटे छोटे differences हैं between two individuals that are belonging to the same family or the same community or the same species, so then in that case this particular difference that is there is known as variation. okay, so if I need to put down, I would say variation is the degree of difference okay. Now what type of difference are we talking about? We are talking about morphological, physiological and other traits. So degree of difference in
morphological, physiological, okay, biochemical, and other traits. Okay, now what difference are we talking about between two individuals or two organisms or two individuals that we say, okay, belonging to the same family, to the same race and to the same species. Okay, so between two individuals belonging to the same family, the same race or the same species. Okay, all the three we put in क्योंकि we talk about in terms of human beings also. अलग अलग races या racial orientation से जो लोग आते हैं, they have got different traits, वो लोग दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग रहते हैं. So these differences that are there, okay, that is known as variation. So in the same species, in the same race, जो छोटे छोटे variations हैं, जो छोटे छोटे differences हैं, these differences are known as variations. Okay, now ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस जो हैं बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं ना, दिस वी ऑलरेडी नो. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है बट नॉट टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट. छोटे मोटे वेरिएशंस होते हैं बट लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, ओके, ड्यूरिंग योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आर प्रोड्यूस्ड during sexual reproduction. Now why are these variations produced? Okay, ये जो variations हैं that happen during sexual reproduction, ये क्यों होते हैं? Okay, now the first thing, chance separation. तो what are the various reasons? Okay, let us look at the reasons why these variations are produced. अभी variation हो रहा है तो obviously इसका explanation at a genetic level हमको ढूंढना पड़ेगा because variation in morphology or phenotype will happen only if there is a variation in genotype. Okay, so let us look at the reasons why these variations are produced. So what are the reasons, okay, for production of variation? Okay, the first thing is during sexual reproduction जब gametes form होते हैं, so when your sperms are getting formed or when your ova are getting formed, okay, उस time पर by chance आपके chromosomal separation हो जाती है. Okay, so this chance separation of chromosomes, okay, during the gametogenesis process. ऑलराइट, सो जब गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं उस टाइम पे अगर बाय चांस आपके क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो देन इन दैट केस यू मे हैव सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो जनरेट होता है. सेकेंड इज क्रॉसिंग ओवर जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके, सो यू हैव क्रॉसिंग ओवर. ओके, क्रॉसिंग ओवर व्हेन डज इट हैपन? मायोटिक प्रोसेस जो है या ड्यूरिंग मायोसिस व्हेन द गैमीट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड उस टाइम पे you have got crossing over so that जो नए reshuffling हो सकती है, not after the gametes are formed, sorry, after the fusion has taken place between the male and the female gametes, उस time पे there is a reshuffling that happens, all right, and this crossing over resulting in genetic exchange, all right, between homologous chromosomes, which again causes or which again results into new genetic combinations, and therefore over a period of time you have accumulation of variation. Okay, then you may have chance coming together of chromosomes. तो जैसे chromosomes by chance separate होते हैं वैसे by chance they can come together also. So during your fertilization process या during your gametic fusion you may have a chance coming together. So coming together of the gametes
by chance, sorry, not of gametes, of the chromosomes, by chance, okay, during fusion of gametes, right? तो जब gametic fusion होती है, that time the chromosomes coming together, and because of that you might end up having some sort of chance fusion events that are there. Another way जिसमें for जो है variation introduce होता है is mutations. Okay, so mutations or sudden inheritable variations that are there may develop. So this is another method, mutations. Mutations क्या है? Sudden and inheritable variations that अचानक से develop होते हैं, either because of some faulty DNA or because of some mutagenic agents. So when you have a sudden irreversible change, irreversible and inheritable change in the DNA, right? All right, and ये DNA का जो change है ये क्यों होता है? N number of reasons are there. Okay, there are a lot of mutagens, कुछ gases होती हैं या तो फिर ultraviolet radiations होते हैं. हम लोग जो खाते पीते हैं उसमें अगर कुछ chemical ऐसा आ जाए which is a mutagen or which is a carcinogen, तो you may have changes in the DNA, and this change in the DNA might be passed on to the next generation, which is why it becomes inheritable. So ये सब जो है, ठीक है, over a period of time, all of these variations जो हैं वो accumulate होते हैं, and they result into these small differences that are there between individuals of the same species. Okay, any young ones, okay, that are born through sexual reproduction are known as offsprings. Okay, so what are offspring? Okay, children, or you can say young ones, generally अगर बोलना है तो born as a result of sexual reproduction. Okay, so ये जो है these are known as offspring, which now brings me, alright, अगर asexual reproduction होता है तो then the cells or the young ones which are produced as asexual reproduction are known as daughters, or they are known as gametes. Alright, now that brings me to the next aspect here, which is accumulation of variation during reproduction. Okay, so let us talk about accumulation of variations, okay, during the reproductive process. Okay, now we've already said variation क्या है. It refers to the differences in characteristics or traits, okay, between individuals of a same species. This we already know. Now what is the importance of variation? एक बार हम लोग पहले भी ये chapters में कर चुके हैं, लेकिन let's just go through it. Okay, what is the importance of variation? All right, the first thing that is the most important thing is that it enables the organism to adapt itself into a changing environment. Okay, so adaptation enables adaptation in a changing environment. Okay, what does this mean? एक बार पहले भी हम लोग ये एग्जाम्पल ले चुके हैं, like in the previous chapter we were discussing about the very same topic, and we had said that what if there is a species of bacteria, or what if there is a species of bacteria which is growing at normal temperatures in the water, and उनके अंदर जो है धीरे धीरे कुछ variations आने लगे because of copying errors in the DNA. You remember? So if you don't remember, go back to that chapter and just listen to that explanation all over again. So temperate waters में अगर कोई bacterium रह रहा है and उसमें धीरे धीरे over a period of time there are some minute changes. Now some of these changes that are there might be changes which enables that organism, okay, to become more resistant to say heat. तो धीरे धीरे जैसे पानी का टेम्परेचर सपोज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
जो पहले की स्पीशीज थी विच वॉज अडेप्टेड टू लिव ओनली इन टेम्परेट वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर्स, ओके, नॉट मोर देन 30-32 डिग्रीज, अचानक से जब टेम्परेचर बढ़ जाए पानी का, तो देन व्हाट विल हैपन, वो पुरानी वाली स्पीशीज जो है दैट माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बट जो नई स्पीशीज है, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव गॉट वेरिएशन, ओके, शायद इनमें से कोई यहाँ पे सर्वाइव कर जाए, एंड इफ दैट इज द केस, तो देन यू हैव गॉट अ स्पीशीज विच इज बेटर अडेप्टेड टू इट्स